Hello, dear aspirants. Welcome you all to Agroacademy. And in this class, we will cover dairy science, a small section in animal husbandry. Right? छोटा section है, but बहुत important है. Very high probable questions can come out of this topic. So let us start. Now, first and foremost is the most important component of dairy is milk. Right? What is milk? Technically, it is the lacteal secretion of the mammary glands of animals. Okay. What are the major constituents of milk? That is, what is milk made up of? 85 to 88% of water. That is, majority of it is water only. 3 to 8% it is fat. It is species specific. That means it depends upon whether it is cow's milk, buffalo's milk, sheep or goat's milk. The fat depends upon that only. The protein is about 3.4%, mainly casein. Casein is the main protein present in milk. Lactose ranges 4.6 to 5%. Again, it depends upon species. Then minerals 0.7%, mainly calcium and phosphorus. pH, slightly acidic pH milk possesses, that is 6.5 to 6.7. The freezing point in milk is minus 0.55 और minus 0.55 डिग्री सेल्सियस. थोड़ा सा कम है, ये 0 डिग्री से थोड़ा सा और कम है. ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.028 से 1.032, राइट. सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है. Next is the unique milk sugar, that is lactose. We know that milk contains lactose sugar. What is it made up of? It is made up of glucose and galactose. So glucose और galactose मिलके बनते हैं lactose, right? Then it is a poor source of iron and vitamin C. So you should remember this, excuse me, that milk is deficient in iron and vitamin C. It's a poor source. Then with regards to annual milk production, India is first. Okay, India is first among the whole world in milk production. Now the per capita milk availability, again question यहाँ से भी बन सकता है. Per capita milk availability in India is 471 grams per day. Okay, बहुत high है ये. जो global average अभी चल रहा है, that is 329 grams per day only. So 329 grams per day की global average के comparison में India की per capita milk availability बहुत ज़्यादा है, 47, almost 471 grams per day. Okay, per person. Okay, that itself means per capita. Then the states that are responsible for highest milk production, first is Uttar Pradesh, second is Rajasthan, third is Andhra Pradesh. Okay, this is according to the latest data. So updated hai, you don't have to worry about it. Okay, so the states that are responsible for highest milk production is Uttar Pradesh, Rajasthan and followed by Andhra Pradesh. Then when we talk about white revolution, that is जो milk production का boom हुआ था हमारे country में, that white revolution also sometimes referred to as Operation Flood. When was it launched? It was launched in 1970. We will talk about this later also. Okay. Now we will talk in terms of absolute figures. So with regards to total milk production, 239.3 million ton milk was produced in 2023-24. Okay, 239.3 million tons. जिससे कि क्या हुआ था, 3.78% 1 ईयर का इंक्रीज हुआ था और 10 ईयर में CAGR का ग्रोथ 5.62% देखा गया था फ्रॉम 2014-15 बेस ईयर. ठीक है, 2014-15 में 146.3 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ था, बट इन द लास्ट 2023-24 ईयर it has grown to 239.3 million tons, which shows a growth of 5.62%. That's a huge growth. Okay, and by now India continues to be the world's largest milk producer and India contributes almost 25% of the global output. आप मतलब आप सोच रहे हैं इंडिया जो मिल्क प्रोड्यूस करती है वो वर्ल्ड का 1/4 मिल्क प्रोडक्शन है. सो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि 1/4 of the world's milk production is done by India alone, right? So ये एक बहुत बड़ी फिगर होती है and that's why India is the leading producer of milk in the whole world. Okay, now this table for you is very very important. Here the different properties of milk, that is water, fat, protein solids, total protein, then SNF and lactose have been mentioned in this table. This table is very important for you.
If not camel, mare and ass, you must remember these first four, that is cow, buffalo, goat and sheep. इन चारों के तो आपको याद होने ही चाहिए क्या क्या, फैट परसेंटेज, प्रोटीन और एसएनएफ. ठीक है, लैक्टोज भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है बट फैट एसएनएफ से तो क्वेश्चंस आते ही है, राइट. सो एटलीस्ट हाईएस्ट और लोएस्ट तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इस टेबल में. बाकी देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस टेबल. यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू. ओके, सो यू कैन सी दैट फैट में सबसे ज्यादा sheep milk contains the highest fat around 7 to 7.9. ओके, एंड सबसे जो लोएस्ट है वो काउ में रहती है 4.14. एंड बफेलो में भी बहुत हाई अमाउंट में, क्वाइट हाई 7.38 एंड गोट में 4.25, राइट. Then if we talk about protein solids, again sheep contains highest amount of protein solids 5.23, followed by buffalo 3.68, then cow and then goat. If you talk about SNF, sheep is again the highest number of solid not fat. It's contained in sheep milk 11.39, and followed by buffalo and cow 9.86, 9.25 and goat में 7.75, right. Then lactose content की अगर हम बात करें तो lactose content, here we can see that cow milk has the highest number of lactose 4.96 and followed by buffalo 5.48, right. So ये थोड़ा important table है. Go through this figures once. At least आपको डबल डिजिट में भी नहीं तो कम से कम इतना तो याद हो ही जाना चाहिए कि काव में अराउंड 5% रहता है. इस तरह से आप याद रख सकते हैं. ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स. दीज आर नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं एंड उनके मिनिमम मिल्क फैट परसेंट और मिनिमम एसएनएफ फैट परसेंटेज और एसएनएफ परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं, राइट. सो फर्स्ट मिक्स्ड एंड स्टैंडर्ड मिल्क. मिक्स्ड एंड स्टैंडर्ड मिल्क का सेम ही होता है, ऑलमोस्ट 4.5 होता है फैट परसेंट एंड एसएनएफ होता है 8.5, 8.5, राइट. इफ यू टॉक अबाउट फुल क्रीम में सबसे ज्यादा होता है फैट परसेंट 6%, राइट. एंड हियर यू कैन रिमेंबर दिस विथ वन ट्रिक, ठीक है. फुल क्रीम मिल्क में 6% फैट होता है और टोन्ड मिल्क होता है, इसमें इसका ठीक हाफ हो जाता है, 6 का हाफ 3 हो जाता है फैट परसेंटेज, राइट. और डबल टोन्ड में उसका भी हाफ हो जाता है 1.5 हो जाता है, राइट. देन स्किम्ड मिल्क में सबसे कम, दैट इज 0.5%. तो ये चारों, these 4 are very very important for you. फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड एंड स्किम्ड मिल्क, राइट. जिसमें से हाईएस्ट मिल्क फैट जो परसेंट है वो फुल क्रीम में होती है 6, उससे हाफ होती है टोन्ड मिल्क में 3, उससे भी हाफ होती है डबल टोन्ड में 1.5 एंड उससे थोड़ा और कम स्किम्ड मिल्क में होता है 0.5%, राइट. इफ यू टॉक अबाउट एसएनएफ परसेंटेज, देन फुल क्रीम मिल्क कंटेन्स 9% ऑफ एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट एंड टोन्ड मिल्क में 8.5, डबल टोन्ड में 9, अगेन 9, ओके, एंड स्किम्ड मिल्क में 8.7. ओके, यहाँ पे काउ मिल्क और बफेलो मिल्क का दोबारा दिया हुआ है 5 to 6% फैट परसेंट, 3 to 4 फैट परसेंट इन काउ मिल्क एंड 9 एसएनएफ here in buffalo milk, and in cow milk it's also 8.5 to 9. ओके, सो ये टेबल भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now that we know that milk is a highly perishable product, right, because it's an excellent medium for growth of microorganisms particularly, so it's highly perishable and that's why it needs processing. So the bacterial pathogens can cause spoilage or diseases in consumers, as well as it will deteriorate the quality of milk. So the usable life of milk can be extended by several ways like cooling, जैसे कि हम फ्रिज में रखते हैं मिल्क को खरीदने के बाद, to influence the quality of raw milk, or by fermentation. One of the important process of milk is pasteurization. Okay, pasteurization is in raw terms we can say it's heat treatment process that extends the shelf life. It reduces the number of pathogenic microorganisms to safe levels. ठीक है, pathogenic microorganisms के नंबर को ये safe levels तक reduce कर देता है, eliminate नहीं करता.
Homogenization. What is homogenization? It is the process where the fat globules in the milk are broken down into smaller and uniform size to prevent the formation of the cream layer. So here you can see before homogenization, this is how the fat globules look. They are non-uniform. कोई कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं. So after homogenization, what happens is that these fat globules are broken down into uniform sized, smaller sized globules, right? And it will help to prevent the formation of the separate cream layer जो form हो जाता है वो नहीं होगा homogenized milk में. Now let us discuss about pasteurization in details. Okay, so pasteurization of milk, it is a process that is aimed at minimizing the health hazards from pathogenic microorganisms through heat treatment. तो इसका main principle जो है वो heat treatment है. This ensures minimal chemical, physical and sensory changes in the milk. So ये pasteurization के process से milk को इंश्योर किया जाता है कि जिससे कि उससे कम chemical, physical और कोई sensory changes आए. And under the process of pasteurization, 99% of the microorganisms get killed. Then milk is cooled to 10 degrees Celsius immediately after the heating process. Okay, after pasteurization, it is cooled down to 5 degrees Celsius or below. अब पैस्चराइजेशन के दो बेसिक मेथड्स होते हैं. वन इज द बैच मेथड, अनदर इज द कंटिन्यूअस मेथड. सो नाम सुन के कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, बट लेट अस डिस्कस इन डिटेल्स. द बैच मेथड, where the milk or milk products are heated and cooled in one or more tanks. So इसमें क्या होता है कि heating होता है every particle of milk to at least 63 degrees Celsius for 30 minutes. So time and temperature दोनों हमारे लिए याद रखना बहुत जरूरी है. 63 degrees Celsius for 30 minutes and then cooling it rapidly to below 10 degrees Celsius, right? Afterward, the milk is cooled as quickly as possible using the refrigerant or chilled water or through a plate or surface chiller. It is ideal for small scale operations. So ये batch method जो है ये small scale operations के लिए ideal होता है. And इसमें 63 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है. एटलीस्ट लिखा है, मतलब it might be more than 63 for 30 minutes and then it is rapidly cooled to below 10 degrees Celsius. Then this handling is done in less than 3000 to 5000 liters of milk. That's why it is being called as suitable for small scale operations. The tanks that may be used can be rectangular, but vertical cylindrical design is preferred for practicality purposes. Next are the continuous methods. Continuous methods में एक होता है HTST, एक होता है LTLT. So HTST simply means high temperature short time. Okay, very high temperature for short time. This is HTST, and LTLT is low temperature long time. This HTST method, it is used for continuous processing. इसमें भी raw milk में होता है, cream में भी होता है. Raw milk में temperature 72 degree Celsius रखा जाता है and time is very short. That is 16 to 20 seconds बस. 72 degree Celsius तक में 16 to 20 degree seconds तक रखा जाता है. And for cream it is more than 80 degrees Celsius for 15 seconds उसकी processing pasteurization के लिए, right? Then under the LTLT method, low temperature long time, temperature रखा जाता है 63 degrees Celsius and time रखा जाता है 1800 seconds, right? Which is you can say around 30 minutes के आसपास हो गया ये. Yes. Now just for ease of memorizing, the three methods under the continuous LTLT, HTST, UHT. UHT मैंने slide में mention नहीं किया है. Only LTLT and HTST I have mentioned. तो LTLT में 63, okay, low temperature for long time 63 degrees Celsius for 30 minutes and HTST में high temperature for short time 72 degrees Celsius for 15 seconds or 15 to 20 seconds. Now this one, it is ultra high temperature. So ultra high temperature pasteurization में क्या होता है, heating of milk or the cream for 135 to 145 degrees Celsius for just 2 to 5 seconds. Time इसमें बहुत कम होती है, 2 to 5 seconds. कहीं कहीं पे आपको 1 to 2 seconds भी लिखा मिल सकता है, right? So ये भी एक method है UHT की. Now इसमें से भी HTST ये method जो है, this is the most popular method in India. Most, or you can say most common method of pasteurization in India. Now we will look into the major milk protein.
सो मेजर मिल्क प्रोटीन जो होती है वो कैसीन होती है। कैसीन के अलावा भी बहुत सारे मिल्क प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कैन यू नेम देम? एक होती है वे प्रोटीन, मिल्क में पाई जाती है अपार्ट फ्रॉम कैसीन, बट 80% ऑफ इट इज कैसीन ओनली। ओके, देन द नेचुरल येलो कलर जो हम मिल्क, काउ मिल्क की देखते हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन, राइट? बीटा कैरोटीन इज फाउंड इन द ग्रास वेयर द काउज ग्रेज। ओके, जो काउज जो ग्रासेस में ग्रेज करते हैं वहां से उनको बीटा कैरोटीन मिलती है, जिसकी वजह से काउ मिल्क की जो नेचुरल येलो कलर आती है, लाइट येलो कलर आती है उसी से। Then what happens when we consume the milk? Our body converts the beta carotene into vitamin A. Beta carotene is converted into vitamin A when the cow milk is ingested by our body. Then buffalo milk का जो color होता है that is slightly brighter or whiter than the cow milk. Cow milk का color थोड़ा सा yellowish होता है, but buffalo milk का color थोड़ा white होता है. Why? Because the beta carotene is already converted into vitamin A in the animal body itself. Buffalo milk में vitamin A में beta carotene already convert हो जाती है. That's why it appears whiter in color. Because beta carotene का natural जो pigment color है that is slightly yellow in color. Okay. Then how do we detect the presence of urea? We know that adulteration किया जाता है milk का, उसमें urea add किया जाता है. So how do we detect it? We will take 2 ml of the milk and add 2 ml of p-dimethyl amino benzaldehyde reagent. ये reagent का नाम थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप. p-dimethyl amino benzaldehyde ऐड किया जाता है. 2 ml मिल्क लेके उसमें 2 ml ऐड कर देंगे. ओके, तो इसको पी पैरा डीएमएबी भी कहते हैं शॉर्ट में, डीएमएबी, डाइमिथाइल बेंजल्डिहाइड रिएजेंट. इसको जब हम मिल्क 2 ml मिल्क के साथ 2 ml पी पैरा डीएमएबी को ऐड करते हैं, व्हाट हैपेंस इज दैट अ डिस्टिंक्ट येलो कलर कम्स. येलो डिस्टिंक्ट, एंड मतलब वो नेचुरल नहीं दिखेगी, वो देख के आपको समझ में आ जाएगा. इट विल इंडिकेट एडेड यूरिया. पता चल जाएगा कि यूरिया इज एडेड. लेकिन अगर इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर, नेचुरल फेंट पिंक कलर, नॉट वेरी फेंट पिंक, यानी कि बहुत लाइट पिंक अगर हुआ, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट वो नेचुरल यूरिया के प्रेजेंस में हो रही है. एंड यूरिया इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड मिल्क अडल्ट्रेंट. ओके, now fat is present as emulsion in milk and protein is present as the colloidal in milk. ये याद रखेंगे कि जो फैट होती है मिल्क में वो एज emulsion प्रेजेंट होती है. What is emulsion? So basically milk जो है ये तो एक complex mixture है, right? So fat जो होती है, fat is present as emulsion. That emulsion is liquid within liquid. So fat is present as a liquid, immiscible liquid, that cannot be dispersed with each other. So emulsion उस टाइप की colloid होती है जहाँ पे दो immiscible liquids होते हैं जो एक दूसरे के साथ mix नहीं हो सकते हैं, that are dispersed through each other. सो मिल्क में क्या होता है कि फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं विद इन द वाटर. सो दिस क्रिएट्स एन ऑयल इन वाटर. ऑयल इन वाटर इमल्शन. ऑयल इन वाटर इमल्शन क्रिएट करते हैं जो फैट प्रेजेंट होते हैं मिल्क में. एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोटीन, सो प्रोटीन के जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं इंटायर लिक्विड मीडियम में, लेकिन डिसॉल्व नहीं होते, ट्रू सोल्यूशन की तरह डिसॉल्व नहीं होते हैं. कैसीन जो मेजर प्रोटीन होती है, कैसीन की बात की जा रही है यहाँ पे. सो वो जो कैसीन मेजर प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं, कैसीन माइसिल्स फॉर्म करते हैं जो मिल्क में डिस्पर्स्ड होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोलॉइडल. And every year 26 November is celebrated as National Milk Day. Why? Because it is the birth anniversary of Dr. Verghese Kurian. Birth anniversary of Dr. Verghese Kurian, who is known as the milkman of India. Okay, or you can say the father of white revolution. Then these are some of the facts that you should remember. Highest body weight किस इंडियन काउ में होती है, यानी इंडिजिनस काउ ब्रीड, कौन से काउ ब्रीड की बॉडी वेट हाईएस्ट होती है. सो लेट मी जस्ट डू इट विद अनदर कलर. यस, हाईएस्ट बॉडी वेट इज प्रेजेंट इन कंकरेज. याद रखेंगे, हाईएस्ट बॉडी वेट इज इन कंकरेज. एंड कंकरेज किस टाइप का काउ है? डुअल पर्पस. कंकरेज इज डुअल पर्पस, दैट इज बोथ फॉर मिल्क एंड ब्रॉड पर्पसेस. सो एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जो डेयरी ब्रीड्स होते हैं कौन से होते हैं कैटल के? गिर, रेड सिंधी एंड साहिवाल.
एंड ड्रॉट ब्रीड्स कौन कौन से होते हैं? हल्लीकर, अमृत महल, देन व्हाट, कंगायाम, राइट। एंड इंडिजिनस डुअल पर्पस कौन कौन से होते हैं? थारपारकर, हरियाणा, कंकरेज, ओंगोल, देओनी, दीज आर दी डुअल पर्पस। एंड एक्सोटिक वेराइटीज जैसे जर्सी, हॉल्स्टीन फ्रीसियन, ब्राउन स्विस, रेड डेन, आयरशायर, ये सारे एक्सोटिक होते हैं। ओके, सो कंकरेज हमारा डुअल पर्पस है। देन हाईएस्ट फैट परसेंटेज किस में होता है? हाईएस्ट फैट परसेंटेज इन एक्सोटिक ब्रीड जर्सी, जर्सी में हाईएस्ट फैट परसेंटेज होती है एक्सोटिक ब्रीड्स में। Then wallowing, what is wallowing? It is a common behavior of buffalo, related to buffalo. ये कुछ नहीं है, it's very simple. You must have seen the buffaloes. They do a process that regulates their body temperature. Basically, they roll in mud or water. Mud and water. वो कीचड़ में या पानी में घुस जाते हैं गर्मियों के टाइम पे. That regulates their body temperature. क्योंकि हमारे बॉडी की तरह उनके बॉडी में जो है वो स्वेट रिलीजिंग सेल्स नहीं होते जो उनके टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में वो मड एंड वाटर में अपनी बॉडी को रोल कर लेते हैं उनको ठंडा रखने के लिए. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वॉलोइंग. दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एज वॉलोइंग एंड इट इज मोस्टली डन बाय बफेलो. Then the highest milk fat percentage in which breed of buffalo? So कौन से buffalo breed के milk में highest fat percentage होती है buffalo की breed में? That is भदावरी, 8 to 13%. And the highest milk producing buffalo breed is मुर्रा. ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें याद रखनी है. ओके, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड कौन सी है? इंडिजिनस काउ ब्रीड हाईएस्ट, टेल मी. राइट, सबको पता है ये साहिवाल, isn't it? Yes. Now, here in this slide, I have summarized you the properties of milk. Acidity 0.14 से 0.18% तक की होती है. pH ranges from 6.5 to 6.7. We already discussed it. Slightly acidic. The specific gravity of milk ranges from 1.018 से 1.036. The density of milk is from 1.027 to 1.033 kg per centimeter cube, and viscosity is 2 centipoise. Okay, then the surface tension is 59 per centimeter. Freezing point is minus 0.57. ये तो minus 0.55 हमने पढ़ा freezing point, and boiling point is 100.17 degree Celsius. ये minus 0.55 degree भी लिखा रहेगा कहीं पे. Okay, so boiling point is 100.17 degree Celsius. Now let us discuss some important questions. First is, what is the freezing point of milk? Just हमने अभी पढ़ा, it is minus 0.55 degree Celsius. Then what is the boiling point? ये भी हमने अभी पढ़ा, it is 100.71 degree Celsius. Now ये सब अभी आपको इजी लग रहे होंगे because ये आपने अभी पढ़ा. एग्जाम में आ जाएगा, इतने क्लोज ऑप्शंस रहेंगे तो you might get confused. Now the next question is, what is the refractive index of milk at 20 degree Celsius? So ये I think मैंने cover नहीं किया है. So what is the refractive index? I'll tell you here. It is 1.3440 से 1.3480. Okay. Refractive index of milk at 20 degree Celsius. So ये value slightly depend करती है on the factors like type of milk. What is it? Skimmed milk or whole milk? Then it depends upon the specific fat as well as the solids content. Right? So ये थोड़ा सा याद रखेंगे. And next is, what is the average viscosity of milk? What is the average viscosity? We just discussed. It is 2 centipoise. Okay. Option number D. यहाँ पे option number B. Next is, which type of milk possesses the highest viscosity? Is it skimmed milk, whey milk, whole milk, buttermilk, cream? ये क्वेश्चन एक्चुअली आप आंसर यहाँ पे नहीं कर पाएंगे because I will discuss in the next class about the value added products of milk. What are the different types? ठीक है, वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे. So you will be able to answer this question there only. Then what is the headquarters of Amul? Where is the headquarters of Amul located? So the name itself, what is the full form of Amul? Can you tell me? It's Anand Milk Union Limited.
right? So the name itself contains Anand, so of course it is located at Anand, Gujarat. Option number B. Okay, so it is located at Anand, Gujarat. ये फॉर्म कब हुआ था? ये कोऑपरेटिव बेसिकली फॉर्म हुई थी 1946 में, led by the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation. So next question is, with what tool is generally used to detect the specific gravity of milk? So कौन सा टूल ऐसा है जो मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, बारोमीटर एंड रिफ्रैक्टोमीटर. सो हाइड्रोमीटर, व्हाट इज इट्स यूज? हाइड्रोमीटर की यूज क्या है? सो हाइड्रोमीटर से डेंसिटी, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी या कभी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मेजर की जाती है. सो डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी बोथ, बट नॉट फॉर मिल्क. ओके, मिल्क के लिए स्पेसिफिकली नहीं, इट इज फॉर एनी लिक्विड. देन रिफ्रैक्टोमीटर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर की जाती है इससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देन बैरोमीटर, वी ऑल नो इट इज फॉर प्रेशर, मेजरिंग प्रेशर. Then thermometer is for temperature, and the right answer here is lactometer. So lactometer is the tool used to measure the specific gravity of milk. Next question is, what year did the Operation Flood begin to enhance milk production in India? So Operation Flood began in 1970. Next is, when was the first round of Operation Flood conducted? सो बेसिकली ऑपरेशन फ्लड 3 फेजेस में हुआ था. 3 फेजेस में हुआ था. फर्स्ट फेज वाज फ्रॉम 1970 टू 1980. सो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में ऐसा मेंशन नहीं है, बट हियर 1970 से 74 है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हम इसी को लगाएंगे. सेकेंड फेज वाज फ्रॉम 1981 से लेकर के 85 तक. थर्ड वाज फ्रॉम 1985 टू 96. सो ये 3 फेजेस में ऑपरेशन फ्लड कंडक्ट कराया गया था. नेक्स्ट इज, वेयर इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI लोकेटेड? सो इट इज लोकेटेड इन करनाल, हरियाणा. मोस्ट ऑफ अस नो दैट. देन वेयर इज द NDDB लोकेटेड? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आनंद में है, गुजरात में है. ओके. देन who was the first chairman of NDDB? So Dr. Verghese Kurian was the first chairman of NDDB. Now the next question is, which breed of buffalo has the highest fat percentage? So we just discussed it. It is Padavari, 13 to 15%, and Murrah is the highest milk producing breed of buffalo. So option B here will be the right answer. Next question, which state is the highest milk producing state in India? So ये भी हमने डिस्कस किया. The first state is Uttar Pradesh, followed by Rajasthan. So option number D is the right answer here. Next is, anemia is in animals is primarily caused by deficiency of which mineral? So anemia spelling यहाँ पे थोड़ा सा wrong है, यहाँ पे बीच में एक A होता. So anemia in animals is primarily caused due to deficiency of iron. एक तो iron है ही, तो you can easily eliminate these 3 options because हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं anemia is caused due to iron deficiency. So आप फंसेंगे कहाँ? ऑप्शन नंबर A और E में, iron and zinc, phosphorus and iron. So how will you eliminate? So इसमें elimination नहीं लगा सकते आप. इसमें आपको पता होना चाहिए that zinc is responsible for iron metabolism. Iron is directly responsible for causing anemia because it's a part of the hemoglobin, but zinc is responsible. It plays a key role in iron metabolism and heme synthesis. Okay, so iron and zinc are associated with each other. So option number A will be the right answer here. आपने देखा भी होगा कि जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो उनको आयरन के साथ साथ जिंक भी रेकमेंड किया जाता है जो थोड़े एनेमिक होते हैं. देन इन टर्म्स ऑफ average milk fat content, which animal has the highest average fat percentage? So we studied it in a table, right? That which animal has the highest fat percentage? It is sheep. Option number D. You can refer this table for revision. Next is, which breed of cow has the highest fat percentage? So cow की कौन सी breed की milk में highest fat percentage होती है? Tell me. Holstein Friesian, Jersey, Guernsey, कंकरेज और साहिवाल. इट्स जर्सी. 4.5 से लेकर के 4.8 तक भी कभी कभी पाई जाती है परसेंटेज. ओके.
So option B is the right answer. Next is which breed of buffalo has the highest fat percentage? Okay, we just studied it. It's Badavari. Next is how many calories does 1 gram fat produce? 1 gram फैट से हमें कितनी कैलोरीज मिलती है? ये तो एक जेनरिक क्वेश्चन है एंड वेरी फैक्चुअल इट इज. बताइए कितनी होती है? रिमेंबर इट्स 9 कैलोरीज. ठीक है, ये रेड में मैं मार्क कर देती हूँ. 1 gram of fat gives us 9 calories. Okay, so option B. उसी तरीके से 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना देता है कैलोरीज? हाउ मच एनर्जी इट प्रोवाइड्स? सो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड्स 4 कैलोरीज. ओके, एंड 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी 1 कैलोरी ही, सॉरी 4 कैलोरीज ही प्रोवाइड करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following vitamins are fat soluble? ओके, सो एक टाइप का होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल. वाटर सोल्यूबल. सो फैट सोल्यूबल में कौन से आते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के. अ डेक यू कैन रिमेंबर लाइक दिस. एंड विटामिन बी एंड सी जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है. ओके, एंड ये फैट सोल्यूबल होता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. सो ये जो सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं, ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नन ऑफ दी स्लाइड्स आर टू बी स्किप्ड हियर. इस नोट्स में जितने भी स्लाइड्स है सारे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है. इन क्वेश्चंस को आप नोट्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं after reading the PDF thoroughly, of course. And in the next daily class, we will cover the rest of the topics like value added products of milk, then the tests of milk quality. Okay, all those things we will cover in the next session. Till then keep on revising what we have done. Animal husbandry एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें डेयरी साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, तो वो हमने स्टार्ट किया है एंड फेयरली गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव कवर्ड, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कवर द रेस्ट ऑफ इट. ओके, सो if you have any doubts, let me know, and do revise the tables properly. Okay, now here in this table you can see the different value added products of milk: butter, ghee, cheese, khoa or mawa, then chhena, paneer, shrikhand, evaporated milk, condensed milk and milk powder. So these are the different products that we use in our household. Different value added processed products होते हैं. So what is butter? Butter is 80% of, contains 80% fat. It is made from the cream of the milk. Then ghee is 99 to 95%, 99.5% fat. Then next is cheese. Cheese is made using rennet, 66 gram per 1000 liter of milk. Okay. Then there is खोआ. तो ये तो हम सबके घर में बनता है. In every household it is made. It is a concentrated milk product जिसमें milk को boil किया जाता है until it gets solidified almost. Then there is छाना और छेना, acid coagulated product जिसमें नींबू या फिर vinegar any acidic किसी product को use करके वाटर को अलग कर दिया जाता है, सॉलिड कोएगुलेट कर जाता है उसमें. देन पनीर, इट इज सिमिलर टू छेना बट इट इज प्रेस्ड. सो ये इसी को जब प्रेस कर देते हैं हम तो देन इट बिकम्स पनीर. देन श्रीखंड, इट इज अ स्ट्रेन्ड एंड स्वीटेंड कर्ड. ओके, इट इज यूज्ड एज अ डिजर्ट बेसिकली. देन देयर इज इवेपोरेटेड मिल्क, 50 to 60% of the water is removed. तो ये जस्ट छेना का एक prior stage है, you can say. Then condensed milk, it is first pasteurized, then sucrose is added 65%. मिल्क पाउडर, जो अमूल का मिल्क पाउडर अवेलेबल होता है, जो बेबी फूड की तरह भी यूज करते हैं कुछ लोग, तो मैक्सिमम 3% मॉइस्चर मेड फ्रॉम पैस्चराइज्ड मिल्क, राइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को देख लेंगे. लाइक क्रीम, it is prepared by churning milk. The fat comes on the top and is separated by draining out the liquid known as cream with 10 to 70% of fat. तो मिल्क को जब हम चर्न करते हैं, यानी कि उसको जब विस्किंग करते हैं या मिक्स करते हैं, देन द फैट स्लोली इट कम्स ऑन द टॉप एंड लिक्विड वो ड्रेन आउट हो जाता है, दैट इज क्रीम. देन देर इज कर्ड convert होता है due to bacterial activities. Now your homework is just tell me the name of the bacteria which is involved for conversion of curd. Name of bacteria. Then buttermilk is there. Buttermilk, it is the leftover liquid after removal of butter.
Ghee, after heating the butter, the water evaporates and the fat contents are almost 100%. So we all know how ghee is made. Almost every household में घी बनती है, right? Next is condensed milk. So it is concentrated by removing the water contents with or without adding sugar. कहीं कहीं पे sugar add किया जाता है condensed milk में, कहीं कहीं पे नहीं. जो जैसे market में milk maid वगैरह available है, those are the examples. It has 31% milk solid with 9% fat. Then there is powdered milk. We all know that. Then cheese, it is coagulated milk with protein, casein, and fat and water. Khoya is desiccated milk prepared by evaporating the water and reducing the bulk to about 70 to 75%, right? Now we will study the tests of milk quality. Milk quality के जो tests हैं हम वो सारे देखेंगे. First is COB test. It is responsible for checking the high acidity detection. So COB test से high acidity की detection की जाती है in milk. Then alcohol test is for acidity. Gerber or Babcock test is for fat content. Iodine is for starch detection. Hansa test काउ और बफेलो मिल्क अडल्ट्रेशन को, काउ और मिल्क की कितनी परसेंटेज मिक्स हुई है मिल्क, वो टेस्ट करने के लिए हांसा टेस्ट किया जाता है. देन मेथाइलिन ब्लू टेस्ट माइक्रोबियल लोड डिटेक्शन के लिए. मास्टर्ड सोल्यूशन टेस्ट टू डिटेक्ट मास्टाइटिस. Now the COB test that we talked about, it is clot on boiling test. So it is used to determine the suitability of milk for pasteurization and other heat treatment process. इसमें क्या किया जाता है कि 5 to 15 ml milk लिया जाता है, उसे हीट किया जाता है in a test tube until it starts boiling. Then the formation of flakes or clots. Flakes या clots formation indicate करते हैं high acidity, making it unsuitable for pasteurization or high heat treatments. क्योंकि high acidity होगी तो वो दूध फट जाएगा and वो छेना में convert हो जाएगा. Okay, so that is clot on boiling test. Then alcohol test, it is used to detect milk acidity, right? Next was the fat test. Fat test के लिए दो थे, जर्बर मेथड, बैबकॉक मेथड. ठीक है, so ये basically it uses a butyrometer which operates based on the centrifugal force. नेक्स्ट इज हांसा टेस्ट. ये एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है कि काउ मिल्क के साथ बफेलो मिल्क कितना परसेंटेज एडल्ट्रेट है, उससे पता कर सकते हैं हांसा टेस्ट से. देन देयर इज आयोडीन टेस्ट. इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन मिल्क. सो आयोडीन का स्टार्च के साथ हमने पढ़ा ही है ऑलरेडी, 11-12 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह आयोडीन इज हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ स्टार्च. इसके एक्सपेरिमेंट्स भी हमने किए थे स्कूल में. Then there is nitrate test. It detects the presence of rainwater in milk. Okay. Then Mested solution test. It is used to detect mastitis disease in milk. Now we will get to know some facts about milk. Highest milk producing state India में कौन सी है? It is उत्तर प्रदेश. Next, sweetest cow milk कौन सी indigenous variety produce करती है? It is साहिवाल, क्योंकि इसमें lactose content बहुत high होती है, right? Then the milk testing tool lactometer for specific gravity. I think ये previous class में हमने पढ़ा था, किसी question में cover किया था I think. Then milk queen of goat breeds, it is Saanen because it has the highest milk production. Then rinderpest. Rinderpest is a disease in cattle also known as cattle plague. Then milk letdown hormone. Which hormone is responsible for milk letdown? Not only in animals but in humans as well. It is oxytocin. And milk secretion inhibition hormone कौन सा है? That is adrenaline, the stress hormone, right? Now let us quickly discuss some facts about the operation flood. Okay, operation flood या फिर जिसे हम white revolution in India भी कहते हैं. White revolution, when was it launched, how did it happen, and all these things we will just quickly look into. Okay, so ये जो white revolution है या operation flood है, ये 3 phases में हुआ था, right? Let me write it here. 3 phases. एंड कौन कौन से 3 phases थे? टाइम लिमिट था फेज 1 का. फेज 1 का था 1970 से 80 तक. देन देयर वाज फेज 2 which was from 1981 to 85. Then there was phase 3 which was from 1985 to 96. Now इसका जो मेन फोकल पॉइंट था, जो मेन सेंटर था, दैट वाज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? ये एस्टैब्लिश हुआ था 1965 में, क्रिएट किया गया था इसको. एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट इज कि कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, आनंद गुजरात, राइट। एंड इसका मैंडेट था टू सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ द आनंद पैटर्न ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो आनंद पैटर्न ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव्स क्या था, वहाँ के जो आनंद के जो लोकल डेयरी फार्मर्स थे उन्होंने अपने आप में कोऑपरेटिव्स बनाया था और वो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे थे मिल्क के प्रोडक्शन को एज वेल एज मार्केटिंग को। सो उसी पैटर्न को ऑल ओवर द इंडिया रेप्लिकेट करने के लिए ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया। ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया 1970 में इन डिफरेंट फेजेस, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ओके, एंड इसके जो मेन ब्रेन चाइल्ड ये किसका था, इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हु इज ऑल्सो नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। और इनके बर्थडे पे ही 26 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल मिल्क डे, राइट। सो ये फर्स्ट चेयरमैन थे एनडीडीबी के, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, एंड his brainchild was this ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। देन ये 3 फेजेस में हुआ, जिसमें पहला फेज में सेल ऑफ स्किम्ड मिल्क पाउडर बटर ऑयल, ये यूरोपियन यूनियन के साथ मिल के कोलैबोरेट करके किया गया थ्रू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देन सेकेंड फेज में नंबर ऑफ मिल्क शेड्स इंक्रीज किए गए फ्रॉम 18 to 136 एंड अर्बन मार्केट्स को एक्सपैंड किया गया और बहुत सारे विलेज कोऑपरेटिव इस्टेब्लिश किए गए। एंड फेज 3 में आते आते लगभग 73,000 डेयरी कोऑपरेटिव्स बन चुके थे। ओके, सो ये ऑपरेशन फ्लड जो है ये रीच कंज्यूमर्स ऑल अक्रॉस द इंडिया, 700 टाउन्स एंड सिटीज थ्रू नेशनल मिल्क ग्रिड। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। ओके, या नेशनल मिल्क ग्रिड के थ्रू कनेक्ट किया गया सबको, नेशनल मिल्क ग्रिड, राइट। एंड मिल्क प्रोडक्शन उस समय 1950-51 में 17 मिलियन टन्स था, राइट। एंड अभी तो इट इज अराउंड 239 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन है इंडिया में, विच अकाउंट्स फॉर अराउंड 24.8% ऑफ द वर्ल्ड। 24.8, यू कैन से 25% भी कह सकते हैं। सो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन इज डन बाय इंडिया, राइट। एंड अनदर थिंग इज दैट वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, ये तो 26 नवंबर इज नेशनल मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑन 1 जून। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है एफएओ के द्वारा, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है, राइट। देन देयर इज वन अवार्ड, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, गोपाल रत्न अवार्ड। सो ये दिया जाता है नेशनल मिल्क डे के दिन, एंड ये किनको दिया जाता है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, जो बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके लिए ये दिया जाता है, राइट। And we all know that the dairy sector has been a major contributor to the growth of rural economy and small and marginal farmers as well. And national dairy plan जैसे कुछ sustainable development focused framework create किए गए हैं, ओके, जो कि हेल्प कर रहे हैं, उनको भी हम एक बार देख लेंगे, जो भी स्कीम्स रिलेटेड है डेयरी सेक्शन से। Okay, we will now quickly get into the schemes. Okay, before entering into the schemes related to dairy, just tell me what is the contribution of dairy sector in the whole agricultural GVA. So not only dairy but जो livestock sector है, livestock, तो you can say dairy and the animal husbandry sector, ये दोनों मिलके 4.5% of the country's GDP of country, टोटल जीडीपी का 4.5% कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड 24% ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, याद रहेगा, 4.5% ऑफ टोटल जीडीपी एंड 24% ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्कीम्स। फर्स्ट स्कीम इज नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। सो ये स्कीम्स में मैं डिटेल्स में ये कवर करूंगी, ये and ये, these 4 schemes we will cover in details, and I have only mentioned those points which are important from exam point of view. हालांकि जैसे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, it's a very broad scheme, okay, it has many points under it, but we will discuss only those points. I have mentioned here only those points that have the most
you can say the most chances of being asked in the exam. Okay, so the first is National Program for Dairy Development, NPDD. This was launched in February 2014 and it is a central sector scheme. That means 100% of the budgetary allocation, 100% of the cost will be borne by the central government. Then it is restructured in July 2021 and extended through 2025-26 under two main components. इसका first component है infrastructure strengthening. That is all the infrastructure related to dairy, be it processing units, storage units, उनके development and strengthening के लिए component A dedicate किया गया है. And the second component is dairying via cooperatives. So cooperatives का establishment and उनकी जो भी marketing हो रही है, training वगैरह, उससे related जो है second component है, that is basically the development of dairy cooperatives. So under this scheme, 16,041 dairy cooperatives have already formed till now, and 15 lakh farmers, almost 15 lakh farmers, farmers organization enrolled हैं under the NPDD scheme, right? And ये किसके अंडर में है? Obviously Department of Animal Husbandry and Dairy. Okay. Next is Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, AHIDF. So AHIDF जो है ये Infrastructure Development Fund के अंदर इसे extend किया गया है with a outlay of 29,000 crore for 3 more years until 2025 to 26. इसका main objective है dairy and meat processing and product diversification. So two parts, processing and product diversification is its main focus. Okay, 3% interest subvention इसमें दिया जाता है for a period of 8 years. 25% credit guarantee भी दी जाती है up to 750 crores credit guarantee fund for MSMEs and the dairy cooperatives, right? Next is Rashtriya Gokul Mission, very important mission. This was asked in this year's UPSC prelims 2025. Question was asked from Rashtriya Gokul Mission. It was launched in 2014 and it is a central sector scheme. इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स. इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स मतलब जो हमारे इंडिया के ब्रीड्स है, बोवाइन ब्रीड्स है, दैट इज काउ एंड बफेलो के, उनके डेवलपमेंट और कंजर्वेशन. सो इसके अंडर में गोकुल ग्राम्स दैट आर इंटीग्रेटेड इंडिजिनस कैटल सेंटर्स जहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह किया जाता है एंड इंडिजिनस जो ब्रीड्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए दूसरे एक्टिविटीज किए जाते हैं, दैट इज डेडिकेटेड टू गोकुल ग्राम्स इंटीग्रेटेड इंडिजिनस कैटल सेंटर्स. इंडिया में 16 सेंटर्स हैव ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एंड दिस राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्क्स अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना फ्रॉम 2021 to 26 with a budgetary outlay of 2,400 crores, right? Next is the National Livestock Mission. It was also initiated in 2014 and it is a centrally sponsored. Remember, it is a centrally sponsored scheme. It has 3 submissions. First is the breed improvement. Second is feed and fodder development. Third is innovation and extension. Okay, so इसका जो financial outlay था वो 2,300 crores था. Now one of the very important thing is that digital platform related to it. It is Udyami Mitra. उद्यमी मित्र याद रखना है. उद्यमी मित्र is related to National Livestock Mission. Okay, where the dairy cooperatives and all can register themselves, the dairy farmers can register themselves. Okay, under this National Livestock Mission, 50% of capital subsidy is provided up to 50 lakhs for horse, donkey, mule and camel related entrepreneurship programs. Okay, so these were all the schemes that we discussed in detail. बाकी इनसे question आने की chances सबसे ज़्यादा maximum है. Okay, and further if any updates would come, then I will keep on updating you with more such videos regarding to these schemes, right? Now let us move into questions. First is what is the average lactose content in milk? So ये हमारे previous session से है. Can you tell me, do you remember what is the average lactose content in milk? Ranges from 4.6 to 5% around. ठीक है? So you can correct out this option. Okay, depends upon species. Then what is the average mineral content in milk? Average जो माना जाता है वो 0.8% के आसपास माना जाता है. The nearest we can find here it's this one, 0.76%. Okay, so you can take out option number B. Next is why is milk considered as an incomplete food? Why is it considered? Because of high fat content? No. It lacks iron?
Yes, we studied that it lacks in iron and vitamin C. It has low protein content. No. It's low in calories. No. 79 calories मिलते हैं हमें. Okay. Then 79%. Then it contains no carbohydrates again. No. So option number B is the right answer. Next is which method is used to detect milk protein. Protein detect करने के लिए कौन सा method use होता है? Spectrophotometry, Geldal method, chromatography, HPLC और titration. तो ये तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो आंसर कर सकते हैं. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है बिकॉज हमने शुरू से पढ़ा है कि जेल्डाल मेथड इज यूज टू फाइंड आउट द नाइट्रोजन कंटेंट. और प्रोटीन का मेन क्या होता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट? इट इज नाइट्रोजन ओनली. सो बाय दैट वी कैन डू दैट. जेल्डाल मेथड इज यूज टू डिटेक्ट द मिल्क प्रोटीन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन फॉर द आर्ट ऑफ मिल्किंग. यानी मिल्किंग करने में टिपिकल ड्यूरेशन क्या कितना टाइम लगता है? 3 to 5 minutes, 5 to 8 minutes, 10 to 12, 15 to 20 or 20 to 25. If you have ever seen or if you have ever done it yourself then you will be able to answer it. 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है. Okay. Next is after calving, when a cow is expected to show estrus. So this is related to the cycle of the cows. सो इट बेसिकली मीन्स हीट. नेक्स्ट हीट पीरियड में आने के लिए उसे 30 से 40 दिन का टाइम लगता है. सो काउ इज एक्सपेक्टेड टू शो द हीट बिटवीन 30 to 40 days after calving. Okay, the time frame that allows the cow's reproductive system, it gives a time to recover and prepare for the next breeding cycle. Okay, next is for cows producing up to 10 liters of milk. How often should they be milked? Once daily, twice daily, thrice daily, 4 times or every other day. सो 10 लीटर ऑफ मिल्क अगर प्रोड्यूस कर रही है कोई काव तो उसे मिल्किंग कितने बार किया जाना चाहिए? इट्स ट्वाइस डेली. ओके. देन व्हाट इज द मेजर मिल्क प्रोटीन? इट इज वेरी इजी. इट्स कैसीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल कैलोरी कंटेंट इन 100 ml ऑफ मिल्क? अभी मैंने आपको बता दिया 79.02 इट इज. आई थिंक प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था. Then what is the casein content in cow milk? Cow milk में प्रोटीन जो होता है casein, what is the amount of it? It's around 3.5%, right? Next question is which breed of cow has the highest body weight among the Indian breeds? Jersey, Holstein. Holstein तो पहली बात Indian है नहीं. Jersey भी Indian है नहीं. Kankrej, Sahiwal और Gir. Which of the following has highest body weight? So it's Kankrej. Next, which behavior is commonly observed in buffaloes? We studied this in last class. It is wallowing, जिसमें वो मड में रोल आउट करती है अपने स्किन, अपने पूरे स्किन टू स्किन मड में कांटेक्ट होता है जिससे कि वो टेम्परेचर रेगुलेट करती है. नेक्स्ट इज विच प्रोटीन इन मिल्क डज नॉट कोएगुलेट व्हेन हीटेड. सो मिल्क में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जिसमें से कैसीन होता है 80%. सो कौन सा प्रोटीन ऐसा होता है जो हीट करने पे भी कोएगुलेट नहीं करता है? याद रखेंगे इट इज लैक्टोग्लोब्यूलिन. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेस्पिरेशन रेट ऑफ बफेलोज. बफेलोज में रेस्पिरेशन रेट क्या होती है? इट इज 15 to 20 per minute. नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग इज द हीट पीरियड फॉर काउ एंड बफेलोज. तो हीट पीरियड जो होता है वो कितने दिन तक, कितने देर तक लास्ट करती है? इट्स 12 to 24 hours. ओके. नेक्स्ट इज which hormone is responsible for milk letdown? So ये हमने पढ़ा अभी. It is oxytocin. Next is which hormone is responsible for stopping lactation? So it is estrogen and progesterone. तो ये तो हमने humans का भी सेम ही सिस्टम होता है, right? So it suppresses lactation. Next is what year was the livestock insurance scheme started? So livestock insurance scheme पायलट बेसिस पे 100 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हुआ था इन द ड्यूरेशन 2005 से 2006 में फिजिकल ईयर्स में. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी. ओके, जिसका मेन एम था टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड लॉसेस एंड प्रोमोट द रियरिंग ऑफ इम्प्रूव कैटल एंड बफेलो ब्रीड्स. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सॉल्टेड स्मोक मीट ऑफ पिग नोन एज? सो वी ऑल नो दैट इट इज बेकन. बेकन को कहा जाता है सॉल्टेड स्मोक्ड मीट ऑफ पिग and it is considered as a delicacy in western countries. The next is what is the rinderpest commonly known as? So rinderpest को हम cattle plague कहते हैं. rinderpest के symptoms क्या क्या होते हैं? इसमें होता है क्या? grain like bumps होते हैं. grain like bumps कहाँ पे?
nostrils and lips of the cattle. Okay. And डिस्चार्ज होता है वाटरी म्यूकस आईज और नॉस्ट्रिल से, जिसमें कि ऑकेजनली ब्लड भी आता है. ओके, सो ब्लडी डिस्चार्ज यू कैन से फ्रॉम आईज एंड नॉस्ट्रिल्स एंड आईज. ओके, इन सम केसेस फीवर भी आता है, डायरिया डिहाइड्रेशन वगैरह अकॉम्पनीड रहती है. ओके, सो दैट इज रिंडरपेस्ट. व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म? एंड इट इज कॉज ड्यू टू वायरस, राइट. इसके लिए टीसीआरपी, टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन दिया जाता है. टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन. ओके, टीसीआरपी वैक्सीन इसके लिए दिया जाता है, राइट. Next is testosterone is also referred to as, so it's very easy, male hormone. Next is what percentage of nitrogen is found in milk? It is around 5%. ठीक है. सो जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, क्योंकि प्रोटीन तो रहता ही है उसमें, उसके अलावा भी जो नाइट्रोजन रहता है दैट अकाउंट्स फॉर अराउंड 5% ऑफ टोटल नाइट्रोजन. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. और इसी के साथ हमारा डेयरी सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है, राइट. एंड I hope every concept is clear regarding to dairy science. If not, then do let me know. You can let me know in the WhatsApp group also. And drop your feedback whether you need anything else regarding dairy sciences. Okay, important है जो भी मैंने कवर किया है. क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कीजिएगा इसके. एंड रिवीजन तो ऑफ कोर्स करना ही है. 2 क्लास में मैंने इसे कंप्लीट करने की कोशिश की है. ऑल्दो आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू द कंटेंट. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं टोटली. ऑल यू जस्ट नीड इज टू revise and attempt maximum number of MCQs and then revise again. Okay, so yeah, I think that's all. See you all in the next section. Till then, keep revising. You have lots of time. Use the time judiciously. Time is money. Remember this. Okay, thank you all.